m v2 square minus 1 by 2 m v1 square. We know that m means volume into density. Delta Ke is equal to 1 by 2 rho dv v2 square minus 1 by 2 rho dv v1 square. That is equation 6. Take a common in both sides of equation 6. Delta K is equal to क्या कॉमन निकलेगा इसमें से हाफ रो dv हाफ रो dv v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. सही है. v2 स्क्वायर ले इसे राइट. This is equation 7. To find change in potential energy, that is mgh2 minus mgh1. We know that mass is equal to volume into density. Again same, volume into density gh2 minus volume into density gh1. Equation 8. Take a common. बोलो. डेल्टा P is equal to rho dv g h2 minus h1. This is equation number 4. In equation 5 means वर्क डन की वैल्यू पूरी यहाँ पर रख दो, के की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, पी की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दो. क्या आएगा इक्वेशन कौन बताएगा? बोलो तो. यहाँ पर रखना है 5 में. तो W की वैल्यू क्या है? ढूंढो. P1 माइनस P2 इंटू dv. सही है. बराबर के की वैल्यू क्या है? कौन बोलेगा? हाफ रो dv v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. फिर प्लस t की वैल्यू क्या है? रो dv g h2 माइनस h1. अब यहाँ से हर जगह से dv ये दोनों में से dv कॉमन लो और dv काटो तो बचेगा क्या इक्वेशन में? rho dv2 square minus v1 square plus बोलो. सही है. gh2 minus h. देखो ये dv यहाँ पर है, ये दोनों में से एक dv कॉमन लो और dv काटो तो तीनों एक साथ काट कर छोड़ दो. तो क्या बचेगा अपने पास? रो भी कॉमन आएगा क्या अपने पास? रो जी नहीं आएगा कॉमन. तो लिखो p1 माइनस p2 बराबर 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो g h2 minus h1. This is called as Bernoulli equation. Equation number 10. First, this is the Bernoulli equation. In a pipe, speed of fluid increases but pressure is decreases. We know that work is equal to force into displacement. Multiply and divide by A in equation 1. That means F by A into dA. F by A is called as pressure. Area into displacement are called as volume. Then change in volume. W is equal to P1 dV and P2 dV. Then change in work done. Find W is equal to P1 dV minus P2 dV. That means take a common dV. That is means W is equal to P1 minus P2 dV. This is equation 4. To find work done,
change in kinetic energy plus change in potential energy. Direct answer is change in kinetic energy, find 1 by 2 rho dV V2 square minus V1 square. Change in potential energy is equal to rho dV G H2 minus H1. All equations can put in equation 5, that is P1 minus P2 dV is equal to 1 by 2 rho dV V2 square minus V1 plus rho dV G H2 minus H1. Take a common dV in both sides and cancel one another each. dV get cancelled. Final answer of the Bernoulli equation is P1 minus P2 is equal to 1 by 2 rho V2 square minus V1 plus rho G H2 minus